क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है? There are two trains of equal lengths, all right, are moving in opposite direction. That means, let me say this is train number 1, right? And here is train number 2. And after that, it also says that the length is same. So let me call this as T2. If their relative velocity of approach, that means relative velocity is already given. And how much is that? 20 meter per second. हमें calculate करना है length of the each train और जो crossing time है that also has been given which is 30 seconds. सीधी सी बात है, in the relative context, the total distance that one train has to cover would be 2L, right? They are moving in opposite direction. And the relative velocity is given, that is 20. So the relative distance is 2L, and where is the time? Okay, the time is given, that is 30. Done. So of course, the length of each train would be 300 meters. Let's go to question number 12. What is the range of a projectile thrown with a velocity 49 meter per second at an angle 30 degree? लेकिन ध्यान देना, angle किसके respect में? Sometimes you are badly trapped. You just focus on the angle and here you find with vertical. Anyway, in this question, regular pattern में दिया गया है, angle की जो value है वो horizontal के साथ है. This is a very, very straightforward question. The value of range is u square sine 2 theta divided by g. Notice, the value of g has not been given. You are not allowed to take 10 meter per second square. नहीं दिया है तो आपको 9.8 ही लेना है. Anyway, ये 49 की value देख के भी एक hint मिल जाता है. Because 49 and 9.8, they would cancel each other. So there are lots of clues that you get in the question paper. So u square, that means 49 multiplied by 49, right? Sine 2 theta. Theta is 30, तो ये बनेगा sine 60. Sine 60 की value √3 by 2. और नीचे रखेंगे g is 9.8, यानी इसको 98 और ऊपर ले जाते 10. As simple as that. अब क्या मुझे बताने की जरूरत है? It's such a simple calculation. √3 को √3 ही रखना है as it is. So yes, when you solve that, that will be option number 1. Look at the ease in the calculation. 49 to 98 and 2 and 5 gets cancelled there. तो ये बन जाएगा 49 into 5, 245, 2 as it is, √3 is there. तो calculation को लेके आपको बहुत गंदे calculations नहीं मिलते. You know, calculations are very comfortable one. But the main point is, the right concept has to strike at the right time. Let's go to question number 13. A person reaches a point directly opposite on the bank of the river. कहने का मतलब, this is the situation of zero drift, है कि नहीं? Because the person starts and reaches directly opposite here. The velocity of the water in the river, जो कि ये direction में हम दिखाते हैं, velocity of river, that is 3 meter per second. Velocity of person in still water, यानी velocity of the person with respect to river. Still water में ये speed है, and that is 5 meter per second. The width of the river, that has been given as 96 meter, and I got to calculate the time taken. ये time निकालना है. Yes, it is a two-step solution. पहले तो हम वो condition निकालते for which the person will reach exactly to the opposite point. सीधी सी बात है, if I call this angle as theta, 5 को resolve कर लेते हैं. 5 cos theta, and this comes out to be 5 sin theta. Now, because the person has to reach directly opposite, इसका मतलब ये component और ये component को cancel होना ही होगा. क्योंकि x component cancel out होगा, तभी तो the person would reach directly along the y direction. So the required condition here is 5 sin theta equals to 3. In other words,
sin theta equals to 3/5. Perfect. So this condition ensures that the person exactly reaches to the opposite bank. लेकिन हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो टाइम निकालने के लिए देखिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए द डिस्टेंस इज 96, सो टाइम विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड एंड द स्पीड इज 5 cos थीटा. बस अब एक आखिरी बात, यहां पर आके घबराना मत कि हाउ विल आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा. आपको थीटा नहीं निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट cos थीटा. तो अगर sin थीटा की ये वैल्यू है, cos थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, अंडर रूट के साथ, तो ये बनेगा 9/25. नाउ लुक एट द ईज इन कैलकुलेशन, 96/5 ये बनेगा 16/25. रूट करेंगे तो 4/5. लुक, 5 and 5 gets cancelled and this now will be 24 seconds. One thing which I have been continuously emphasizing, NEET examination में जो calculation है वो बहुत ज़्यादा difficult नहीं आते. मतलब no one is going to ask you under root 2.303 कितना होगा. No, that's not what NEET is made. You need to know the concept. सही concept पता है, calculation wise they are not much troublesome. ये ध्यान देना, okay? Calculations इतने गंदे नहीं होते, but हाँ concepts are very much important. And again I would like to repeat, AIATS के हर एक सवाल जो फाइनल टेस्ट सीरीज है, इसके हर एक सवाल को काफ़ी इंपॉर्टेंस के साथ देखना. मेरी बात आपको फाइनल नीट वाले दिन याद आ जाएगी. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी ऑलमोस्ट ऑफ द सेम वेवलेंथ, और वहां पर बड़े ईज के साथ आपको लगेगा कि आप FTS में ही बैठे हैं. यू वुड नॉट फाइंड एनी न्यू एनवायरमेंट है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14. Girl takes time T1 to walk up a stationary escalator. यानी time T1 while she is walking. If she remains stationary on the moving escalator, it takes time T2. That means the girl is simply standing. The escalator is moving, so it takes time T2. In terms of T1, T2, we got to calculate if she walks up the moving escalator. हालांकि देखो ये एक नीट के जो भी एस्पायरेंट है ये वैल्यू को याद ही करते थे, तो इफ़ यू कैन रिमेंबर आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, क्योंकि नीट में इस तरह की टेक्निक्स आपको लगानी होती है. सो इफ़ यू रिमेंबर दिस, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड T1 T2 बाई T1 प्लस T2. हाउएवर अगर याद नहीं है तो क्या करें? लुक, व्हेन दिस पर्टिकुलर गर्ल वॉक्स, तो लेट्स से दैट द वॉकिंग स्पीड इज x, right? So I can write that time equals to distance by speed, so d divided by x. D is the total distance, x is the speed. And when the elevator is moving, distance तो वही रहेगा, and of course the speed of the elevator, let's say that is y. Now the third case, distance वही है, but this time she is walking, the elevator is also moving, यानी टोटल स्पीड क्या बनेगा? x प्लस ऑफ y. तो जी ये कैलकुलेशन में बनेगा, x के बदले में लिखिए d बाई T1 और y के बदले में वैल्यू उठा के डाल दीजिए d बाई T2. सो दिस पर्टिकुलर टाइम इज नाउ गोइंग टू बी, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2. एनीवे मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा कि आप ये रिजल्ट को एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझ के याद ही कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? A stationary man observes that the rain is falling vertically downward. कहने का मतलब the rain is falling vertically downward. When he starts running with a speed 8 km per hour, so velocity of man in this direction, let me call, that would be 8 km per hour. He observes that the rain is falling at an angle 45 degree with the vertical. यानी ये जो velocity है, he is observing while during the motion. कहने का मतलब ये pure situation है velocity of rain with respect to man की. सीधी सी बात है, देखो velocity of rain with respect to man जब निकालते क्या करते हैं? velocity of rain को add करते हैं minus Vm के साथ.
तो Vm इस डायरेक्शन में है, so minus Vm will be in this direction and that value would be 8, right? So this is Vr, this is minus Vm, और इसी का जो resultant आएगा that will be Vrm. Now just say Vrm इस डायरेक्शन में और ये एंगल 45 डिग्री है. अब सीधी सी बात है ना कि ये एंगल 45 है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, because tan 45 is this length by this length. So if this is 8, this also has to be 8, और यही 8 है velocity of ray. That means the option will be 8 km per hour. Let's go to question number 16. The initial velocity of ground-to-ground projectile is given by this much. Then its final velocity when it touches the ground. Okay, that means initial velocity is here 3 and this is 4. Now due to this is going to move projectile in this manner. Projectile के concept में हम total velocity देखने के बजाय we focus on the individual component. क्योंकि x component of the velocity ये तो हमेशा ही same रहता है, so this will remain 3. जहां तक y component का सवाल है, initially that decreases, becomes 0, and when it comes back with the same speed, but mind you, in the opposite direction. बस इसी vector को i और j में लिखना है. So 3i cap minus 4j cap, option number 4. Let's go to question number 17. Now again from projectile, a particle is projected with a velocity u so that the range is thrice the greatest height. In other words, r equals to 3 of h. That is what the question says. We got to calculate the horizontal range. Perfect. We have to calculate the range in terms of u, isn't it? So it's so simple. देखो, सबसे पहली बात r equals to 3h से we can calculate the angle of launch. कैसे? Do you remember? अगर याद नहीं है तो इस expression को तो आप याद कर ही लो. h by r is 1 by 4 tan theta. Now the value of r is 3h. तो r को 3h रखने पर ये बनेगा 1 by 3. So I will get tan theta is 4 by 3. अब आपको range निकालना है. तो रेंज के लिए आपको चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू. आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम. टैन थीटा अगर 4/3 है, एक छोटा सा ट्रायंगल बना दीजिए, नॉट टू स्केल दो. ये थीटा है तो ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा. टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस. तो हाइपोटेनियस क्या बनेगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो हाइपोटेनियस विल बी 5. बस अब मुझे रेंज की वैल्यू निकालनी है. सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. डू यू रिमेंबर साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी. तो ये बनेगा 2 यू स्क्वायर बाय जी. नाउ केयरफुली एंड पेशेंटली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखिए. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 4/5. कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज 3/5. वी आर डन. G को G ही रखना है. So 2, 4, 8, 3, 24 by 25. Option number 1, that's the correct one. All right, question number 18. The vector which is perpendicular to both A and B and has unit magnitude. सबसे पहली बात, आप सबको पता है perpendicular का केस आता है तो इसका relation cross product के साथ है. Like all of us know कि A cross B ये वेक्टर, एंटायर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर रहता है. नाउ परपेंडिकुलर पार्ट हैज बीन डन. नाउ वी नीड टू एंश्योर द मैग्नीट्यूड इज 1. यूनिट का मतलब 1, isn't it? तो किसी भी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. नाउ माय एंटायर वेक्टर इज दिस. इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. दैट्स गोइंग टू बी अ यूनिट वेक्टर. तो परपेंडिकुलर तो क्रॉस लिखते ही हो गया और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करने पर द मैग्नीट्यूड ओवरऑल हैज बिकम 1. सो ऑप्शन नंबर 2, दैट विल बी द करेक्ट वन. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 19. नाउ व्हाट डज इट से?
A, B, C are three physical quantities such that A और B का same dimension है और C has a different dimension. Which of the following may be meaningful? यानी आपको अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? बस नाम डिफिकल्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अदरवाइज वेरी सिंपल. सेम डायमेंशन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट डायमेंशन को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो आपके पास क्लू है ए और बी. देखिए यहां पर गड़बड़ी क्या हो गई, ए और सी इनके डायमेंशंस अलग है, तो कैसे ऐड कर सकते? तो गलत है. बी और सी दे हैव डिफरेंट डायमेंशन, सो यू कांट सब्ट्रैक्ट. यहां देखते बी और सी डिफरेंट डायमेंशन, सो यू कांट ऐड. हालांकि अब तो बचा फोर्थ ऑप्शन, बट इसको भी एक बार जस्टिफाई कर लेते. वेल, A और B they have same dimension, so they are subtracted perfectly fine. कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. और C का अलग डायमेंशन है, डिवीजन में तो अलाउड है for a different dimension. So option number 4, that's going to be the correct one. What does question number 20 say? ये यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल जो है ना काफी टेक्निक के साथ सॉल्व की जाती है. अगर टेक्निक पता है वर्बली कर सकते हैं. देखो ये 2 तो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि 2 डज नॉट हैव डायमेंशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट. अंडर रूट का मतलब पावर इज हाफ, μ0 एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, 2 इज सिंपली डिस्ट्रैक्शन. तो इसका मतलब ये ओवरऑल चीज क्या बन गई है? ये वेलोसिटी बन गई है, और वेलोसिटी का डायमेंशन यही है, राइट?